Good morning, dear students. Welcome to BPHES CSRD Institute of Social Work and Research Social Work Lecture Series. Method Course 1 Social Casework Working with Individuals and Families. Unit 5 Models, Settings and Counseling in Social Casework. In the previous lectures, we have learned concept, history, values, principles, process, tools, techniques, and roles of social casework and social caseworker. Today, we will be discussing different settings of social casework, different models of practice of casework, and the relationship between casework and counseling. So this shall be the last lecture on the subject of social casework. So, settings, models, and scope of counseling. What are the settings of social casework? There are two different settings, two types of settings, or two different interpretation, two ways of understanding the settings of casework. Casework कहाँ कहाँ प्रैक्टिस हो रहे हैं, प्राइमरी सेटिंग में और सेकेंडरी सेटिंग में प्रैक्टिस हो रही है. Casework is generally practiced in several settings: school, hospital, industries, tribal, rural, and urban community setting, institutional settings of children, women, youth, the aged, the sick, the differently abled or the divyang, the terminally ill, and the destitute. Broadly, casework settings are divided to primary and secondary setting. So, casework ऐसे बहुत सारे सेटिंग में प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्कूल में, हॉस्पिटल में, इंडस्ट्रियल सेटअप में, कम्युनिटी सेटअप में और इंस्टीट्यूशनल सेटअप में. बहुत सारे केस वर्क प्रैक्टिस इंस्टीट्यूशनल सेटअप में चल रहे हैं. इंस्टीट्यूशन मतलब बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, युवक के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए, बीमारी लोगों के लिए, दिव्यांगजन के लिए, जो टर्मिनली इल, कैंसर पेशेंट, HIV इन्फेक्टेड और डेस्टिट्यूट, ऑर्फनेज जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल सेटअप में केस वर्क ज़्यादातर प्रैक्टिस कर रहे हैं. ये प्रैक्टिस को प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऐसे दो तरीके से डिवाइड किया जाएगा. प्राइमरी सेटिंग मीन्स providing the direct assistance to the individual. It is called the immediate assistance. For example, if a child is found roaming on a street with no shelter, he may need immediate intervention. He may be admitted to some child care institution such as Childline to provide him immediate assistance before initiating any formal procedure related to producing before the police, child welfare committee and observation home. So that is the primary setting. Childline will be the primary setting where the social case worker will find and communicate with the client, collecting his personal information. The case worker here will try to know the background of the child and the person behind his the reason behind his present condition. So primary settings include school, family setting, open community, which means the street, railway station, bus stand, etc.
where the caseworker might find the client or the child in need of individual assistance for immediate intervention. जो पहले डायरेक्टली क्लाइंट को मिलते हैं उसी सेटिंग्स को बोलते हैं प्राइमरी सेटिंग्स. वहाँ the caseworker directly find the person who is in need of assistance. Industrial setting, education setting, hospital outpatient department, integrated child development scheme ICDS means Anganwadi centers, primary health centers, police station are the primary settings where some cases are identified and referred to the secondary setting for proper casework. Primary setting में क्या है, ये लोगों को पहले मिलते हैं, उसके साथ पहले इंटरेक्शन होता है, लेकिन केस वर्क शुरू होता है, लेकिन उसका कंप्लीट बाकी जो प्रोसेस है वो सेकेंडरी सेटअप में होता है. उसका जो एक्चुअल प्रक्रिया है, प्रोसेस, वो सेकेंडरी सेटिंग में होता है. इनिशियली इनटेक रिकॉर्ड, वो फर्स्ट डायग्नोसिस तक द प्राइमरी सेटिंग में होता है. तो प्राइमरी सेटिंग में जो केस वर्क होता है वो कंप्लीट नहीं होता है. केस वर्क शुरुआत होता है, लेकिन ये प्रॉपर सेकेंडरी सेटअप में ट्रांसफर होता है, रेफर होता है, वहां केस वर्क पूरी तरह कंप्लीट होता है. इन प्राइमरी सेटिंग देयर इज द फर्स्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द क्लाइंट, एंड इन द सेकेंडरी सेटिंग देयर इज ऑलवेज ए रेफर्ड कॉन्टैक्ट. वो केस वर्कर पहले जो मिलते हैं वो प्राइमरी कॉन्टैक्ट, प्राइमरी सेटिंग बोलते हैं. रेफर्ड कॉन्टैक्ट किसी ने लेके आया एजेंसी में, और किसी एजेंसी से प्रॉपर सेटअप में, सेकेंडरी सेटअप में लेके आया, दैट इज कॉल्ड द रेफर्ड कॉन्टैक्ट. दैट इज द सेकेंडरी सेटिंग. A child located in the open community will be admitted to the primary level agency like Childline for the preliminary assessment. After appropriate assessment, the child will be referred to the secondary setting where the child will receive suitable assistance. Childline में देखो, वो चाइल्ड को लेके आते हैं, रेस्क्यू होता है, उसके साथ रैपो बिल्डअप होता है, उसके साथ केस वर्क शुरू होता है. लेकिन उसमें ना पूरी तरफ केस वर्क नहीं होते. उसको कुछ चिल्ड्रंस होम में रेफर होता जाता है, उसका एडमिट हो जाता है, फिट इंस्टीट्यूशन, चाइल्ड केयर एजेंसी में उसको रेफर हो जाता है, वहाँ उसका केस वर्क कंटिन्यू होता है. So that is the secondary setting. Once the client is admitted in the primary setting, the child welfare committee will the caseworker will collect all the required information, refer the child to the secondary setting, an appropriate children's home. For instance, the caseworker in the primary setting found out that the child is the victim of trafficking. Immediately, he will be sent to those organizations which are working for rehabilitation of the trafficked children. Here again, the caseworker in secondary setting will take the detail about the client's situation based on the report given from the primary setting. प्राइमरी सेटिंग में जितना भी इंफॉर्मेशन आया उसी के ऊपर उसका कंटिन्यूएशन में सेकेंडरी सेटअप में काम शुरू हो जाएगा. सो सेकेंडरी सेटिंग्स इंक्लूड ऑब्जर्वेशन होम म्हणजे निरीक्षण होम, चिल्ड्रन्स होम, रेस्क्यू होम, शॉर्ट स्टे होम, डेस्टिट्यूट होम, जेल्स, हॉस्पिटल एक्सेट्रा. यहाँ क्या है, द क्लाइंट और द चाइल्ड डायरेक्टली नहीं आ सकते. Child can be referred through some NGO, Childline, police, child welfare agency, social worker. Child को लेके जाते हैं. जो पर्सन फर्स्ट उनके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया है, दैट इज द प्राइमरी सेटिंग. जब उसको लेके आते हैं कुछ ऑब्जर्वेशन होम में, चिल्ड्रंस होम में, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी द्वारा, फिर सेकेंडरी सेटिंग में आ जाते हैं. सो दीज आर द सेकेंडरी सेटिंग्स. Casework is undertaken only after an appropriate reference from a primary setting. So secondary setting में casework करने के लिए, शुरू करने के लिए कुछ तो प्राइमरी सेटिंग का रेफरेंस चाहिए. सेकेंडरी सेटिंग इज ओनली अ रेफर्ड सेटिंग, जहां क्लाइंट को दूसरा किसी ने रेफर किया है. नाउ
So that is the primary and secondary settings of casework. Just to summarize, प्राइमरी सेटिंग में क्या है, जहां बच्चे को या क्लाइंट को डायरेक्टली सोशल वर्कर मिलते हैं, स्ट्रीट से, ओपन कम्युनिटी में, स्कूल में, फैमिली में, जहां बच्चे को जो क्लाइंट इन नीड को पहले कॉन्टैक्ट मिलते हैं, दैट इज द प्राइमरी सेटिंग। उसके बाद उसको प्रॉपर सेकेंडरी सेटअप में रेफर किया जाता है थ्रू चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और थ्रू सम हेल्पलाइन, थ्रू द पुलिस, थ्रू द हॉस्पिटल। जहां सेकेंडरी सेटअप दैट इज ए शॉर्ट स्टे होम, रेस्क्यू होम, ऑब्जर्वेशन होम, हॉस्पिटल का इम्पेशेंट इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, स्कूल का, जहां ये प्रॉपर केस वर्क का सेटिंग होता है, वहां एजेंसी के द्वारा उसका पूरी तरफ केस वर्क किया जाता है, दैट इज द सेकेंडरी सेटअप। नाउ let us now come to the next topic, that is models of casework practice. ये models क्या है? Models, there are 6 models of casework. Social diagnosis model, supportive and modificatory model, problem solving model, crisis intervention model, classified treatment method model, competency based model. So there are 6 different ways of practicing casework. Now ये model क्या है? मैंने एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। अगर आपको कुछ बीमारी आ जाता है, आपको डॉक्टर को मिलने के लिए अलग अलग ऑप्शंस होता है। कुछ लोग एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, इंग्लिश मेडिसिन। कुछ लोग सोचते हैं आयुर्वेदा मेरा बीमारी के लिए अच्छा होगा, वो आयुर्वेद डॉक्टर को मिलते हैं। कुछ लोग होम्योपैथी के पास जाते हैं, कुछ लोग नेचुरोपैथी के पास जाते हैं, कुछ लोग सिद्ध वैद्य। ऐसा मेडिकल प्रैक्टिस में भी अलग अलग मॉडल होता है। लोगों को विश्वास है कुछ मॉडल में मेरे अच्छा फायदा हो जाएगा। जैसे केस वर्क में भी अलग अलग मॉडल बनाया हुआ है। यह मॉडल केस वर्कर के लिए है, क्लाइंट के लिए नहीं है। क्लाइंट के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन केस वर्कर के लिए उसका जो बिलीफ है, उसका विश्वास है, कुछ मॉडल अच्छी तरफ हो जाता है। कुछ केस वर्कर क्या होता है, एक इंटीग्रेटेड मॉडल भी प्रैक्टिस करते हैं। कुछ क्लाइंट के लिए कुछ मॉडल का कुछ आइडिया लेके उनका खुद का एक मॉडल डेवलप होता है। एक्चुअली दैट इज द बेस्ट मॉडल। केस वर्कर अपने लिए एक नया मॉडल डेवलप करना चाहिए। जो अच्छे मॉडल जो प्रैक्टिस हो रहे दुनिया में, सारी जानकारी लेना है, उसमें से उसके लिए केस के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार एक नया मॉडल, ये नए सारे मॉडल से अच्छे पॉइंट लेकर ये नया मॉडल उन्होंने डेवलप करना चाहिए। नाउ हमारे सिलेबस में हमें क्या जानकारी लेना चाहिए, ऐसे डॉक्टर्स ऐसे अलग तरीके से मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं। जैसे केस वर्क में भी सोशल वर्कर को अलग अलग ऑप्शंस, चॉइस दिया गया है। जिसको प्रैक्टिस करते उसमें से सबसे अच्छा एक क्लाइंट के लिए, एक सिचुएशन के लिए, एक फैमिली के लिए कौन सा सबसे बढ़िया होगा, ये तय करना केस वर्कर के ऊपर है। सो नाउ लेट अस लर्न ऑल दिस मॉडल्स वन बाय वन इन ब्रीफ। द सोशल डायग्नोस्टिक मॉडल, this was the first model. This was developed by Mary Richmond. ये मैंने सबसे पहले जब प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया, प्रोसेस में मैंने एक्सप्लेन किया था सोशल डायग्नोस्टिक मॉडल। सोशल डायग्नोस्टिक मॉडल इज वेरी सिंपल मॉडल। आपको 3 प्रक्रिया उसमें याद रखना है: स्टडी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट। सोशल डायग्नोसिस, स्टडी मीन्स अभ्यास, डायग्नोसिस मीन्स उपचार, निदान, then treatment means उपचार। So this is very simple model। केस वर्क में पहले क्या करना है,
फैक्ट फाइंडिंग है, स्टडी है, उसके बाद डायग्नोस करना है उसका समस्या क्या है, उसके बाद उसको मदद करना है, हेल्प, दैट इज द ट्रीटमेंट. सो सिंपल मेथड, स्टडी, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. ये सबसे पहले मॉडल था 1917 में, मेरी रिचमंड इसको बनाया था. सो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट केस वर्क मॉडल. इट इज नॉन एज सोशल डायग्नोस्टिक मॉडल. इसमें मेनली देर आर थ्री प्रोसेस, वेरी सिंपल स्टेप्स: स्टडी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट. द सेकेंड मॉडल, सपोर्टिव एंड मॉडिफिकेटरी मॉडल, ये हैमिल्टन ने डेवलप किया था. मॉडिफिकेटरी मीन्स बिहेवियर मॉडिफिकेशन, सपोर्टिव मीन्स सोशल सपोर्ट. जब मैंने आपको टेक्निक के बारे में बताया था, वहां मैंने बताया सपोर्टिव टेक्निक, सोशल सपोर्ट, emotional support, being with the client. So just understanding the client and encouraging the client. So this is something like person-centered, a behaviorist model, जहाँ क्या होता है, person's self-determination. So person को रिस्पेक्ट करते हैं, उसका डाइवर्स बैकग्राउंड को रिस्पेक्ट करते हैं, उसको समझकर उसको इतना देते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, सोशल सपोर्ट देते हैं, उसको पता आप अच्छी तरह, आपके पास कोई गलती नहीं है आप. सो इट इज जस्ट क्रिएटिंग ए पॉजिटिव एनवायरनमेंट, जस्ट क्रिएटिंग ए सपोर्टिव एनवायरनमेंट, जस्ट गिविंग सोशल सपोर्ट, पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड, एंड द पर्सन विल मेक हिज बिहेवियर, क्रॉस चेकिंग विद द case worker. So helping the client to modify his or her own behavior just by giving a social support, emotional support, psychological support. उसको सपोर्ट देंगे और उसको बताएंगे तुम्हारी जिंदगी तुम्हें जीना है, मैं आपको सिर्फ एनकरेज करने वाला है. उसको कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम केस वर्कर करेंगे. केस वर्कर सोचेंगे दिस क्लाइंट इज केपेबल ऑफ मेकिंग हिमसेल्फ or changing himself. The client require only a supportive environment. इसको सोशल सपोर्ट मिला नहीं है, फैमिली में मिला नहीं है, इसको स्कूल में मिला नहीं है, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, वर्क सेटिंग में नहीं मिला है, जहाँ है यहाँ केस वर्क को वो सपोर्ट दे रहे हैं, एंड इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं, सोशल सपोर्ट दे रहे हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे रहे हैं. द क्लाइंट विल चेंज हिमसेल्फ, द क्लाइंट विल इम्प्रूव हिज बिहेवियर, the client will treat himself with a social support from the caseworker. This is called the supportive and modificatory model. Third one is problem solving model. This is widely practiced. This problem solving model was discussed in detail जब हम components के बारे में डिस्कस कर रहे थे सेकेंड लेक्चर में, components of casework. So Helen Harris Perlman has given this 4P: person, problem, place and process. ये 4 कंपोनेंट, ये एक केस वर्क ऐसा सिस्टमैटिकली 4 कंपोनेंट में समझकर प्रैक्टिस करना, दैट इज कॉल्ड द प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल. सो हियर वी एनालाइज व्हाट आर द पर्सनल फैक्टर्स, what are the place related factors, that means agency related, what are the problem factors, and the process, how to conduct this process में से 6 steps है, उसमें study, continuous assessment, diagnosis, treatment, follow up, termination, so all the systematic process. So this is the most widely practiced, and this is the latest model, and that is given by Helen Harris Perlman in 1957 in her book Social Casework, a Problem Solving Process. इसमें क्या बोलते हैं? The person is coming to the agency with a problem, where a professional help the person to solve his problem through a systematic process. So this is the problem solving method of or problem solving model which we have discussed in detail
in the first unit as well as in the third unit. The process में हम process के बारे में detail चर्चा किया. That what is the at present currently बहुत सारे social case worker ये model practice कर रहे हैं. 4P model: person, place, problem and process. Process में 6 process. So that is called the problem solving model. Now crisis intervention model. What is this crisis intervention model, which was given by Lydia Rappaport, an American caseworker and clinical practitioner? What is this crisis intervention model? This is very interesting model. This is something like disaster management model, crisis intervention. इसमें क्या होता है? अगर एक this is mostly practiced with adult client, especially with youth who are victims of substance abuse, drug addiction, criminals. So crisis intervention model में क्या होता है? Here the case worker has an important role, a role to bring or make the person realize that there is a great disaster, crisis in his life. अगर आप ऐसा जिंदगी जीते हो, आपका फ्यूचर में इतना बड़ा डिसास्टर आने वाला है. अगर एक सब्सटेंस अब्यूसर है, अल्कोहलिक पेशेंट है, उसके साथ जब केस वर्कर ये मॉडल से प्रैक्टिस करते हो, उन्होंने क्या बताना चाहिए? केस वर्कर ये क्लाइंट को ऐसे बताते हैं, तुम्हारा जिंदगी ऐसे जिया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है. आपका फैमिली आपको छोड़ने वाला है, आपका बीवी आपको छोड़ देंगे, आपको बच्चे, आपको फैमिली आपको छोड़ने वाला है, आपको नौकरी जाने वाला है, आपको कोई इनकम सोर्स नहीं होने वाला है, आपका लिवर कैंसर होने वाला है, आप तो हॉस्पिटल में आपका जिंदगी, रेस्ट ऑफ द जिंदगी आप हॉस्पिटल में जीने वाला है. आपका जिंदगी देखो 2-3 साल में तो खत्म होने वाला है. अगर एक बच्चे को उसका क्राइसिस के बारे में समझाने के लिए क्या बताएंगे? अरे तुम ऐसा स्टडी करते हो, स्कूल बंक करते हो, कुछ स्टडी नहीं करते हो, तुम्हारी जिंदगी क्या होने वाला है मुझे पता है. बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसे बच्चों को मिला है. तुम्हारा जिंदगी पूरा स्ट्रीट में होने वाला है. आप एक स्ट्रीट में ऐसे छोटे छोटे क्राइम करते, बेकिंग करते, आपका जिंदगी तो पूरा ऐसे निकालने वाला है. आपका सपना कुछ भी पाने वाला नहीं. You are going to have a miserable life in future. You will not get a good job. You will not get married to a good, you will not have a spouse, you will not have a family. Your life is become more miserable than your parents. Then लोग सोचने लगेंगे, या मेरे जिंदगी क्या होने वाला है. बहुत सारे क्लाइंट क्या होते, उसका फ्यूचर के बारे में कुछ चिंता नहीं रहते. What future, what is the disaster he is going to face, उसके पता नहीं होता है. So this is the crisis intervention model. अगर वो क्लाइंट को पता नहीं होता है मेरा जिंदगी में कोई क्राइसिस है, कोई डिसास्टर है, वो केस वर्क को मानेगा नहीं. So first bring a disaster, make the person realize that there is a disaster in his or her life. Then the person will be in a position to seek help. अरे मुझे मदद करो, मुझे पता नहीं था ऐसा होने वाला है. So make the person realizes the crisis, realize the disaster. That is the starting point of case work. Then the client will be ready to listen to the case worker. The child will be ready to listen to you as a case worker and will seek help. जब तक वो आपको मदद नहीं पूछेंगे, तब तक वो मदद लेंगे नहीं. When the client is ready to listen, then only you can guide him. So preparing the client for the guidance, that is the crisis management, crisis intervention model. So this is very interesting model, and case worker can always try this. This way you can start, you can make the person ready to listen to you. And let the person feel a crisis, a disaster situation in his or her life, that person will not be ready to listen to the counselor, listen to the caseworker. Now, classified treatment method. Florence Hollies, another American clinical practitioner, a great caseworker. So she has developed this
classified treatment method, classified treatment model. What is this classified treatment model? The classified treatment model is purely a psychological model. There are certain diagnostic manual. So it is called DSM, Diagnostic Statistical Manual, 5th revision, revised 5th edition. This is a standardized manual which is used by the psychologists everywhere in the world. This is developed by American Psychological Association, which is known as DSM-5, Diagnostic Statistical Manual. A similar manual is developed by the WHO, World Health Organization, which is known as International Classification of Disease, ICD, 10th revision. Now the 11th revision is being developed, ICD 11th, which is known as Blue Book. It is an international classification of diseases. उसी में there is a chapter for psychological diseases, mental disorders. So, what is this diagnostic statistical model? जितना भी जो प्रॉब्लम है, केस वर्कर के पास जितना भी केसेस आते हैं, all this case can be classified into one of this psychological disorder. So this is purely psychological model. Casework initially came out from this counseling background. So whatever casework problems, all this problem has a reference in psychological manual. This is the philosophy behind this method. इसलिए आपको standardized मॉडल होता है. ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? अगर आपके पास है चाइल्ड है who is disturbed in the studies, not paying attention, psychologist will diagnose something called ADHD, attention seeking behavior, hyperactivity. That is ADHD. If the person is alcoholic, this alcoholism comes under psychological disorder. उसके लिए भी एक ट्रीटमेंट है, standardized procedure होता है. So you get the help of the psychological manual. उसके क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, उसके साथ क्या क्या प्रोसीजर करना चाहिए. So प्रोसीजर आपको फॉलो करना है. So whatever problem you understand, you diagnose in casework has definitely a reference in psychological manual. फिर वो मैनुअल को उसको रिलेट करो, उससे साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं उसको देखो, उससे मदद लो, उसी प्रकार एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक ट्रीटमेंट उसको दे दो, साइंटिफिक काउंसलिंग उसको दे दो. दिस इज द क्लासिफाइड ट्रीटमेंट मॉडल. सो केस वर्कर इज नॉट इन डार्कनेस. उसको खुद एक मॉडल डेवलप करने की कोई जरूरत ही नहीं. देयर इज ए स्टैंडर्डाइज्ड मॉडल, उसको आपको रेफर करना है. WHO का मैनुअल आपको रेफर करना है, ये अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन का, APA का ये DSM आपको रेफर करना है. फिर उसी प्रकार आपको जितना भी प्रॉब्लम है उसी के अनुसार इंटरप्रेट करना है. ये केस तो इसमें होता ही है. उसको you have to develop, you have to diagnose this problem in accordance with the standardized manual and give a proper scientific clinical treatment. So that is the clinical diagnosis or classified treatment model. Finally, we have this competence-based approach, which was developed by Elleen Grabrill, another great clinical practitioner, psychologist, and a social caseworker in America, has developed this competency-based approach. Now, we can also understand this approach something like strength-based approach. This is the recent name. Professor Venkat Pulla in Australia has developed a strength-based practitioners network. What is this strength-based practice? That is very similar to this competency-based approach.
what is this competency based approach or the strength based model? Now, this is something opposite to the problem based approach. What is the connection between the problem oriented approach and the strength based approach? This is something very recent approach, strength based approach in casework. We know that every individual has got strength and weakness. So by analyzing something called SWOT analysis, strength, weakness, opportunities and threat or challenges. So in this competency based approach, we begins with analysis of the strength of the person. What are the strong points of this child? What are the hidden talents of this child? What are the strong aspects? Instead of analyzing the problem where this person is weak, इसका जो प्रॉब्लम क्या है उसके ऊपर तो ध्यान निकालो. अटेंड इसके ऊपर क्या क्या कैपेसिटी है. If the child is weak in mathematics, weak in English, instead of helping the child to improve his maths and mathematics or English, the caseworker will try to analyze अगर ये बच्चे में क्या strength है. The child is good in music, arts, drawing, Marathi, social sciences. Can the child make a life in this based on his strength, based on his available competency? So, shifting the attention from problem to the strength and trying to guide the person. चलो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, उसी के ऊपर आपको जिंदगी बन सकते हैं. Don't get disappointed beyond your failure. Don't waste your time on analyzing the reasons for your failure. Try to find out what are the strengths, what are the capacities, what are the hidden talents, what are the talents which are not been discovered yet. आपका जो blank areas है, जहाँ आपका ताकत क्या है, उसी के ऊपर आपको जिंदगी बन सकते हैं. Not everyone is going to become doctor or engineer. There is successful life for businessmen, social worker, musicians, artists, automobile mechanics. So, help the client to explore new areas of his own hidden talents and help the person to develop a life, guide the person based on his unique talents. Everyone has a unique talent. Nobody is sent in this world by God empty-handed. सभी के पास एक ही जैसा टैलेंट नहीं है. वो टैलेंट को, that uniqueness. So this is based on the uniqueness of the individual, helping the person to explore the strong points and helping that person to develop a life, come up in life based on this strength. So these are the 6 models of social casework. Now coming to the last topic, casework and counseling. So मैंने बहुत बार बताया, casework and counseling, they are very similar. Now this last topic we are going to discuss what are the similarities, what are the dissimilarities. दोनों में क्या क्या same है, क्या क्या अलग अलग है, वैकल्पिक क्या है. So first we will discuss what are the similarities. Casework and counseling, both are methods of working with individual. दोनों individual के साथ काम करने का तरीका है. Both are helping the individuals for better living, better adjustment with environments, family, school and occupation setting. Casework और counseling, दोनों का पर्पस एक ही है. दोनों क्या करते हैं, व्यक्ति को मदद करते हैं फॉर ए बेटर लिविंग, अच्छा जिंदगी पाने के लिए, फॉर ए बेटर एडजस्टमेंट, फैमिली में, स्कूल में, वर्क प्लेस में अच्छी तरफ एडजस्टमेंट होने के लिए मदद करने का तरीका है दोनों.
थर्ड वन, बोथ आर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। ये दोनों में एक ही चीज होता है, लोगों को समस्या जो है उसको सॉल्व करने का। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है, दो बोथ आर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। फोर्थ वन, बोथ रिक्वायर डीप नॉलेज अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। दोनों में साइकोलॉजिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है। वो वर्तना ह्यूमन बिहेवियर का साइंटिफिक साइड, little bit of psychological information is very much important for practice of both casework and counseling, because both are making changes in the human life. लोगों को मदद करते उतने उसका वर्तनावर बदलाव लाने के लिए। सो वर्तन का साइंटिफिक नॉलेज, साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर बोथ केसवर्क एंड काउंसलिंग। लास्ट वन, बोथ हैव सिमिलर स्किल्स एंड टेक्निक्स। मैंने जब टेक्निक्स डिस्कस कर रहे थे वहां मैंने बताया काउंसलिंग टेक्निक्स। सो दिस काउंसलिंग टेक्निक्स आर कॉमन फॉर काउंसलिंग एंड केस वर्क। जो स्किल्स होता है केस वर्कर का, वो स्किल काउंसलर को भी चाहिए। सो काउंसलर का जो स्किल्स है केस वर्कर को भी चाहिए। सो स्किल्स एंड टेक्निक्स आर वेरी सिमिलर फॉर काउंसलर्स एंड केस वर्कर्स। So these are the similar points. So in this case we can say casework and counseling are similar with regard to these 5 aspects. Now, what are the differences? So it is very important to understand what are the differences. Now I'll explain very simple language what are the differences between casework and counseling. हमने पहले साइड में देखा ये दोनों में क्या क्या सेम है। Now we are going to say what are the differences. Casework, shorter period, 3 months, 6 months, maximum 1 year. That is the casework duration. Counseling is longer period. Minimum is 1 year. It can go up to 3 years, 5 years. Psychoanalytic counseling, it runs for 5 years, 8 years. It is mainly a psychological treatment, psychiatric treatment. All the psychological treatments are for longer duration. So counseling is comparatively longer than casework. Second one, home visit. Home visit is almost essential in casework, especially for in the second stage, continuous assessment, verification of the fact. वहाँ home visit होता ही है casework में. Counseling, home visit is not essential. In काउंसलिंग में क्या होता है, समटाइम द क्लाइंट्स आर कमिंग इन ए वेरी कॉन्फिडेंशियल सिचुएशन। दे टेल द केस वर्कर, मैं आपके पास काउंसलिंग के लिए आया, मेरे फैमिली को पता नहीं, उसको जानने का भी जरूरत नहीं। आई डोंट वांट माय हस्बैंड वाइफ नो दैट आई हैव कम फॉर काउंसलिंग। वो चुप चुप कर करते हैं काउंसलिंग कभी कभी। दैट इज ऑल्सो द कॉन्फिडेंशियल पार्ट ऑफ द काउंसलिंग। सो home visit is not essential in counseling, but it is almost essential in casework. Now in casework, environmental modification means casework ज़्यादातर family के साथ, वातावरण के साथ काम करते हैं। Here the blame is not on the client. So caseworker always, it is social diagnosis. The purpose is bringing change in the environment. So that is the primary aspect in casework. But no environmental modification in counseling. Counseling, attention is the person, behavioral change. The change is in the individual, not in the environment. Environment is the secondary concept. The fourth difference, collateral contact, which means caseworker always emphasize contact with the family members, with the blood relations, and the family members. That's very important. In counseling, no collateral contacts. It is not essential. Sometimes it is required, it is advised, but it is only secondary. Primary attention is the primary focus is only the individual. Now the casework is social diagnosis, counseling is psychological diagnosis. Casework में क्या है? Social. Casework में it is a social problem, not individual problem. And social exploration, understanding, investigating the social background, family background, school background, neighborhood, that is more important in casework. Counseling में क्या है? IQ टेस्ट करते हैं, bipolar टेस्ट,
साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस, और ट्रीटमेंट इज प्योरली बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस. They are not interested in social diagnosis. Now, next difference, casework, improve the interpersonal relationship. Counseling, focus on intrapersonal development. उसका खुद का विकास, that is purpose of counseling. Casework में the person's better adjustment in the family. The caseworker does not believe that this person has a problem. Caseworker believes that person has some problem in adjusting with the individual. So adjustment with the environment is the purpose of casework. But personal development with change within the person is the purpose of counseling. Now, next difference, knowledge of social science and psychology is important for casework. Deep-rooted knowledge of psychology is important for counseling. Counseling में ज़्यादातर साइकोलॉजी अप्लाई करते हैं, केस वर्क में ज़्यादातर सोशियोलॉजी अप्लाई करते हैं. सोशियोलॉजी, सोशल साइंसेस, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, दिस ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर केस वर्क. So we want to understand the person in environment, the ecological perspective. But in counseling, it is purely psychological perspective. Now the case work is no psychological test. In counseling, psychological test is essential. No counseling begins without an IQ test. Generally, counseling always depend upon some standardized psychological test. केस वर्क में कोई भी psychological test का जरूरत नहीं है. It is purely based on social diagnosis. The last difference, case work is practiced by social workers, counseling is practiced by psychologists. This is very important. We don't expect psychologists to practice case work. We also don't demand the social workers to practice counseling. There is clear demarcation. Counseling is a highly specialized psychological treatment. It is a psychotherapy. What case worker does is social case work, and he may use some techniques, some skills of counseling, but his area is case work, mostly working with the society, social background, family, and it is purely social diagnosis. Psychologist is practicing psychiatry. It is a psychotherapy. So with this, we have come to the conclusion. So we have concluded our subject. So hope you have got a broad idea about what is casework. Now you have to go through the books, the references which I have given to you for further understanding, and wish you all the best. And don't forget to put your comments in the chat box. I'll be available to respond to them. So with this, we conclude the method course, social casework, working with individuals and families. Wish you all the best. Thank you.